Imagine this: job gone, medical emergency, and family crisis. Question is not will it happen? Question is are you financially ready? In 2026, expenses are higher and layoffs are real and medical inflation brutal. So today I'll explain 3 months versus 6 month emergency fund, exactly how much you need, where to park your money, liquid fund versus FD versus savings, which is smarter. No theory, only practical plan. Emergency fund is not an investment. It is not a return. It is for survival. To protect you from job loss, medical emergency, sudden family expenses, and business cash flow disruption. Think of it is a financial oxygen. Without it, even a 20,000 emergency can push you into credit card debt at 36 to 42% interest. There is a no universal rule. It's depend on your risk profile. 3 months is enough if you have stable salaried job, dual income family, no dependents, EMI is manageable, and your job industry is stable. Example, if your monthly expenses 40,000, emergency fund would be for 3 months. That means 40,000 into 3, it's a 1.2 lakh should be your emergency fund. This is minimum survival buffer. 6 months is safer if single income family, you have kids or dependents, high EMI going on, self-employed, and your job is in a volatile sector like IT startup, sales, etc. If your monthly expense is 40,000, the 6 month saving should be 40,000 plus 6. That means 2.44 lakh should be your 6 month emergency fund. This gives a breathing space. My honest 2026 recommendation, if you are in India in 2026, minimum 4 to 6 month expenses आपको रखना पड़ेगा एज ए इमरजेंसी फंड, because job market recovery now takes 3 to 5 months average. Don't calculate based on salary, calculate based on essential monthly expenses, जैसे कि रेंट EMI हो गया, ग्रॉसरी, स्कूल फीस, इंश्योरेंस प्रीमियम, यूटिलिटीज एंड मिनिमम SIP. It is actually optional. Now important thing, where to park this emergency fund. इमरजेंसी फंड शुड बी देयर जिसमें हमको हाई लिक्विडिटी मिल जाएगा, लो रिस्क है, कोई मेरा पैसा घटेगा नहीं, एंड कैपिटल प्रोटेक्शन होना चाहिए, एंड क्विक एक्सेस हो जाए, जब भी मुझे पैसा चाहिए मुझे वो मिल जाना चाहिए. लेट्स कंपेयर सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, एंड liquidity mutual fund. These are the three major options that we can utilize to keep our emergency fund. Let's understand the pros and cons for all these elements. Starting with the savings account. प्रोज, इंस्टेंट एक्सेस हो जाता है, जीरो रिस्क है, एंड ATM विड्रॉल एनी टाइम. कॉन्स, लो इंटरेस्ट रहता है, आपको इंटरेस्ट 2.5% to 4% के अंदर मिलेगा, एंड मनी इजीली गेट स्पेंड. बेस्ट फॉर 1 month एक्सपेंस बफर ओनली, डोंट कीप एंटायर फंड हियर. फिक्स डिपॉजिट में प्रोज है, सेफ है, हायर रिटर्न देन सेविंग, स्टेबल भी है. कॉन्स में होता है प्री मेच्योर विड्रॉल पेनल्टी लग सकता है, इनकेस आपको सडनली चाहिए, आप FD तोड़ के पैसे उठाना चाहते हो तो 1% का भी कवर चार्ज लेता है. बेस्ट स्ट्रैटेजी होगा कीप 1 to 2 month एक्सपेंसेस इन शॉर्ट टर्म FD, सेफ बट स्लाइटली लेस फ्लेक्सिबल. Liquid mutual fund. So what are they? Liquid mutual fund invest in treasury bill, commercial papers, and short term debt. Example, HDFC mutual fund, SBI mutual fund, ICC potential mutual fund. उसका प्रोज बहुत सारा है, स्लाइटली बेटर रिटर्न देन सेविंग्स अकाउंट डेफिनेटली, लो वोलेटाइल है, 1 day रिडेम्पशन मिल जाता है, एंड सुइटेबल फॉर पार्किंग आइडियल कैश. कॉन्स, नॉट 100% रिस्क भी, वेरी लो रिस्क दो, taxation as per debt fund rules, best for 2 to 4 month emergency corpus. 50,000 आप सेविंग्स अकाउंट पे रखो, 1 लाख आप शॉर्ट टर्म FD कर दो, एंड 1.5 लाख लिक्विड फंड में रख दो. दिस गिव्स instant access, stability, and slight return optimization. Big mistake people make: investing emergency fund in equity, using credit card as an emergency backup,
counting EPF as an emergency fund, and mixing emergency money with a saving or travel. Keep it separate always.